हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन मैथ विथ एकेडमी। तो हम लोग आपकी जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स थे उसके ऊपर जो एक्सरसाइजेज हैं उनको सॉल्व कर रहे थे। तो लास्ट क्लास में हमने 5 प्रॉब्लम सॉल्व करी थी। तो आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड सो ऑन। तो आइए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 6। वी हैव कंप्लीटेड टिल 5। ओके। तो 5 में क्या था कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी a⁻1/x-1 इंटू एक्स। तो इसका लिमिट जो आता है दिस इज टू द बेस ई लॉग ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इसमें वी हैव टू कैलकुलेट लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एंड दिस इज ऑफ साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। ओके, तो ये आपको कैलकुलेट करना है। एंड यू कैन सी when x is tending to 0 then sin x will be tending to 0 and log x will be tending to infinity. So this is nothing, this is you can say this is your 0 into infinity form. This is 0 into infinity form. Okay, so simply you can just calculate, convert in the 0.0 or infinity upon infinity form. तो इस साइन को हम अपॉन में भेज सकते हैं। तो यू कैन राइट हियर दिस इज साइन x टेंडिंग टू 0, दिस इज 1 अपॉन cosec into log x. So now when x tending to 0, this cosec x will be tending to infinity and numerator is also tending to infinity. So this is now infinity upon infinity form. अब इसमें हम डीएल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, है ना। तो वी कैन जस्ट नाउ अप्लाइंग द डीएल हॉस्पिटल रूल। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, लॉग एक्स का डेरिवेटिव लिखेंगे तो दिस विल बी 1/x, और cosec x का डेरिवेटिव जो होता है दैट इज योर माइनस ऑफ cosec x इंटू cot x। ओके, तो दिस इज ओके, तो ये कैसे लिखा बाई डी एल हॉस्पिटल रूल रूल। ओके, नेक्स्ट you can see limit x tending to 0 and here is 1/x is in the numerator। यहाँ पर जो हमारे पास cosec x है इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन एक्स इंटू जो हमारे पास cot x है इसको लिख सकते हैं cos x डिवाइडेड बाई cos x डिवाइडेड बाई साइन। ओके, सो फ्रॉम हेयर यू कैन सी ये हमारे पास जो है साइन साइन मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर एक्स, वो जो कि न्यूमरेटर में चला जाएगा और एक्स अपॉन में आ जाएगा। तो इट विल बी लुक्स लाइक दिस, दिस इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एंड दिस इज माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई दिस इज योर एक्स कॉज ऑफ। ओके, सो हेयर यू कैन सी कि अगर हम एक्स टेंडिंग टू 0 अप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर में भी 0 आ जाएगा, डिन्यूमरेटर में आ जाएगा, तो नाउ इट इज 0 अपॉन 0 फॉर्म। तो अगेन यू कैन अप्लाई डीएल हॉस्पिटल रूल। तो लेट्स अप्लाई। तो दिस इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, और अप्लाई करेंगे तो साइन का हो जाएगा दिस इज 2 साइन ऑफ एक्स एंड साइन का होता है कॉस ऑफ एक्स। ओके, दैट इज ओके। दिस इज डिवाइडेड बाई एक्स, कॉस का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। ओके, एंड प्लस एक्स का तो 1 हो जाएगा, तो दिस विल बी रिमेन्स कॉस ऑफ एक्स। तो यहाँ पर अगर हम अभी लिमिट अप्लाई करते हैं तो यू कैन सी कि ऊपर तो 0 आएगा बट नीचे सम फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी। फाइनाइट क्या, 1 आ जाएगा एक्चुअली, बिकॉज जो फर्स्ट टर्म है डिनोमिनेटर में उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, और जो सेकेंड टर्म है कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इट विल बी इक्वल टू 0। तो दिस लिमिट विल बी इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास लिमिट कैलकुलेट हो गई। तो दिस implies when you are going to calculate this limit x tending to 0, this sine of x into log of x
is just equal to 0. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है दैट इज योर 0. क्लियर. आइए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं. 7 के अंदर क्या है? दिस इज 7th नंबर प्रॉब्लम. दिस इज लिमिट x tending to 1, x tending to 1, and this is your 1 minus x tan pi x divided by 2. Okay, so this limit x tending to 1, this is 1 minus x tan pi x divided by 2. When you're putting x is equals to 1 here, this is 1 minus 1, it becomes 0, and tan pi by 2. Tan pi by 2 की जो वैल्यू होती है that is your infinite. Okay, because tan is your cos sin upon cos, है ना. तो जो cos pi by 2 होती है उसकी वैल्यू होती है तुम्हारे पास 0, so it will be infinity. So this is nothing, this is your, you can say, this is your 0 into infinity form. Okay, so let's convert it. So limit x tending to 1, ये 1 माइनस एक्स आप न्यूमरेटर में रखिए और जो कॉट tan है इसको कॉट में कन्वर्ट कर लीजिए. दिस इज कॉट पाई बाई 2 ऑफ एक्स. ओके, तो नाउ इट इज 0 अपॉन 0 फॉर्म. अभी हमारे पास क्या बन गया? 0 अपॉन 0. ओके, अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं. लेट अस डिफरेंशिएट इट. तो डिफरेंशिएटिंग x टेंडिंग टू 1. अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर रिमेनिंग कहेगा माइनस का 1 बचेगा, है ना. x का माइनस 1 हो जाएगा, 1 का तो 0 हो जाएगा. कॉट कॉट पाई बाई 2 एक्स का जो डेरिवेटिव होता है दिस इज माइनस कॉसेक स्क्वायर पाई बाई 2 ऑफ एक्स इनटू पाई बाई 2 ऑफ एक्स का क्या बचेगा? पाई बाई 2. Okay, so this will be remains, this is limit x tending to 1, minus and minus cancel, and this is 2 upon pi, and this is cosec square of pi by 2x. तो इसमें जब हम x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो जो cosec pi by 2 है उसका वैल्यू भी क्या होता है? 1 होता है. ठीक है, बिकॉज वी नो दैट कि cosec थीटा इज जस्ट इक्वल टू 1 अपॉन साइन, है ना. तो हम जब साइन हमारा पाई बाई 2 1 होता है तो कॉसेक पाई बाई 2 भी हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 होगा. तो इसमें जब लिमिट अप्लाई करेंगे यू विल गेट 2 अपॉन पाई. और यहाँ पर जो हमने डेरिवेटिव लिखा था यू कैन जस्ट यूज से हियर बाई डीएल हॉस्पिटल को. ओके, so this is your 2 upon pi is your answer. So this implies the limit of this function when x tending to 1, this 1 minus x into tan pi x by is just equal to 2 upon pi. Is it clear? Okay, let us see the answer. 7 is 2 by 5. Okay, so question number 7 we have completed. Its answer is 2 upon 5. आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? दिस इज योर लिमिट x टेंडिंग टू 0 and this is x square actually, and this is your log x square. So you can see this is again 0 into infinity form. So you can just apply to convert it in the 0 upon 0 or infinity upon infinity form. Okay, so here this is log of here is x square. So if you want to take common, you can also take the common here. It will be x square into this is 1 upon x. Okay, so this is now infinity upon infinity form. This is now infinity upon infinity form. So you can take the derivative of it.
ठीक है, तो डिफरेंशिएट कर दीजिए लिमिट x टेंडिंग टू 0. So here you will have 1 upon x square in numerator into x square का क्या हो जाएगा, this will be 2x. Okay, and this is divided by 1 upon x square क्या हो जाएगा, -2 हमारे पास बाहर आ जाएगा, and this is 1 upon x cube. Okay, so what is remaining here? 2 से 2 you can cancel it out, and minus this, and this is cancelled, and x with this cancel, it will be 2 remains. So हो जाएगा, this is limit x tending to 0, and x square in the numerator is remains. Okay, so it will be minus of x square is remains, and when you apply x tending to 0, this will be tending to 0. So limit of the eighth, question number 8 is your 0 there. क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं हम लोग, तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम. दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 cos x की पावर cos. You can see when you applying cos is tending to pi by 2, this cos pi by 2 is tending cos pi by 2 is 0, it will be cos x will be tending to 0 and cos x tending to 0, so this is nothing, this is 0 to power 0 form. तो इस तरीके प्रॉब्लम करने के लिए हम क्या करते हैं, जस्ट टेकिंग दिस लिमिट इक्वल टू ए, लेट दिस इज इक्वल टू a, limit x tending to pi by 2, and this is your cos of x to power cos 6. Okay, taking log on both sides. On both sides, है ना. तो जब हम log ले लेंगे तो you have this is log of a here, and ये log हमारे पास लिमिट के अंदर चला जाता है, तो it will become limit x tending to pi by 2. This is cos of x into log of x by property of log. It will be looks like, okay, because a log of m की power n is just equal to n log m. ये प्रॉपर्टी का यूज भी कर लिया हमने, लॉग को यूज करते हैं. अब यहाँ पर देखेंगे कि जब अप्लाई करेंगे तो ये तो 0 की तरफ टेंड करेगा, और दिस विल बी टेंडिंग टू इन्फिनिटी. तो दिस इज नाउ 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म. ओके, तो अब हम इसको जो कॉस है इसको डीन्यूमरेट, इसको इसका रेसिप्रोकल लिख लेते हैं. दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2, so this will be log cos x is divided by sec x. cos का क्या उल्टा होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, sec x. तो now this sec x will be tending to infinity and numerator is tending to infinity, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, infinity upon infinity form. So now you can apply the DL hospital rule. This is limit x tending to pi by 2, और log का हो जाएगा, दिस इज 1 अपॉन cos ऑफ x, और cos का जो डेरिवेटिव होता है माइनस का sin x होता है. ओके, sec x का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज योर sec x into tan x. ओके, so what is remains here, this is by DL hospital rule. This is by DL hospital rule. So what this is limit x tending to pi by 2, and this is sin upon cos means tan. So tan से tan cancel, this will be remains cos to ऊपर पे this is minus का sin of x, sorry minus का cos x will remain, because 1 upon sec is there, or 1 upon sec will be the cos x, so it will be minus of cos. Or when you apply the limit x tending to pi by 2, the cos x will be tending to 0, so this whole will be tending to 0. So the limit of the question number 9 is given is 1.
वन कैसे आ जाएगा भाई? यहाँ पर तो आंसर जीरो ही आ रहा है, बिकॉज व्हेन यू पुटिंग cos पाई बाई टू की वैल्यू जीरो होती है, और ये sec x का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज योर sec x into tan x. आई थिंक आई एम करेक्ट. नो, सॉरी 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 सॉरी, इट्स नॉट योर आंसर. ये गलती आप भी ना करिएगा, है ना. दिस इज नॉट योर आंसर. दिस इज because we had taken log already. So this is actually the value of log a is just equal to 0. तो ये हमको निकला है, और a हमारे पास लिमिट है. तो हमको इसे क्या करना पड़ेगा, इसको एंटी लॉग लेना पड़ेगा. दिस implies a just equal to e to power 0 and that will be equal to 1. This is your. तो ये जो जब आप सॉल्व कर रहे हो लॉगरिथमिक लेके, तो आपको बहुत सावधानी पूर्वक काम करना है, ताकि आप, क्योंकि एक बार जब आपने लॉग लिया तो एंटी लॉग भी लेना पड़ेगा, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिखना पड़ेगा. ठीक है. तो लॉग ए की वैल्यू जीरो आए, नॉट देयर द लिमिट वैल्यू, वो लिमिट की वैल्यू नहीं है. तो आपको ए बराबर ई की पावर जीरो दैट इज इक्वल टू 100. ओके. So this is your answer. So this implies the value of this limit is just equal to 1. This implies this limit when x tending to pi by 2, this is cos of x is just equal to cos of x is just equal to 1. Okay. आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. So this is your limit x tending to 0. X tending to 0. This is your x cot of x. Okay. तो यहाँ पर जब हम x बराबर 0 के, cot x will be tending to infinity. तो this is 0 into infinity form simply. तो इसको हम simply x tending to 0 और x और यहाँ पर 10. तो now it is 0.0 form, or we can easily calculate this limit by DL hospital. So this is limit x tending to 0, x का डेरिवेटिव 1 और tan क्या होता है, sec स्क्वायर होता है, और by DL hospital. By DL hospital rule. So this is sec 0 का मतलब होता है 1. So this is your 1. This is your 1. तो ये आपका. So this is question number 10. 10 का आंसर क्या है? 1. आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं. दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू 0, और दिस इज 1 अपॉन x का पावर 10 of it. So when x tending to 0, this 1 upon x will be tending to infinity, and this tan x will be tending to 0. So this is of the form infinity की पावर 0 फॉर्म. ठीक. तो फिर से हमको इसको log लेके करना पड़ेगा. तो this implies we are taking here, so we can just let this is a is just equal to this limit x tending to 0, and this is 1 upon x tan of it. Okay, so taking log on both sides, this is a limit x tending to 0, 1 upon x tan of x. So this is a log of a is just equal to limit x tending to 0, or this will be tan x into log of 1 upon x. Okay, now this is tending to infinity, and this is also tending to 0. So this is now 0 into infinity form. Okay, when this 1 upon x will be tending to infinity, the logarithmic is also tending to infinity. Okay, so this implies this is log of
a is just equal to limit x टेंडिंग टू 0 और tan को हम अपॉन में भेज सकते हैं, तो दिस विल बी log 1/x divided by cot of. So now cot x will be tending to infinity and numerator is tending to infinity, so this is your infinity upon infinity form. Okay, so this is your infinity upon infinity form, so this is log of a is just equal to limit x टेंडिंग टू 0 और log का जो हमारे पास डेरिवेटिव होता है दैट इज योर 1/x, तो दिस इज 1/x ये हो जाएगा और फर्दर हम 1/x करेंगे तो माइनस का 1/x स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर हम करना चाहें तो यू कैन जस्ट डू लाइक दैट। अगर आप एक तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं, किसी भी कोई दिक्कत नहीं है, बट यू कैन आल्सो ब्रेक इट। log x 1/x है तो इसको लिख सकते हो log 1 माइनस का log x। ओके, log 1 माइनस का log x, log m/1 का फार्मूला log m/n जस्ट इक्वल टू log m माइनस का log n। तो ये हम रिजल्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पर इफ यू वांट। दिस इज cot of x। So this is infinity upon infinity form. So easily you can say this is log of a just equal to limit x tending to 0. Apply the limit. So log 1 means 0. This is nothing to do. This is minus log x. तो माइनस log x का हो जाएगा -1/x और cot का जो डेरिवेटिव होता है दिस इज माइनस cosec स्क्वायर, this is minus cosec square x. Okay, we did by the DL hospital, right? DL hospital. Okay, so next what we will do, this is your log of a is just equal to यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x यहाँ पर आ जाएगा, तो दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 और ये cos हमारा ऊपर चला जाएगा, इट विल बी sin स्क्वायर ऑफ x divided by x. So you can see clearly it is again 0.0 form, 0.0 form. So again further we can apply the DL hospital rule, limit so this is log of a is just equal to limit x tending to 0 and this is 2 of sin x into cos x divided by 1. So by BL hospital rule, so यहाँ पर अगर लिमिट आप अप्लाई करते हैं तो यू विल गेट 0. So log of a is just equal to, because sin 0 is 0, so you will get 0, and from here you get a is just equal to e power 0 and that is equals to 1. So the value of this limit is just equal to 1. So this implies limit x tending to 0 of 1/x tan x is just equal to 1. This is your answer. Okay, so we get this one, question number 11. Now question number 12. Okay, so question number 12 is what? This is limit x tending to 0. This is tan x divided by x 1/x square. So you know that जो हमारे पास ये लिमिट है इतना, this limit is tending to 1. We know that since we know that limit x tending to 0 of tan x upon x is tending to 1 and this limit x tending to 0 of 1/x square will be tending to infinity. So you can easily see that this is nothing, this is a 1 to power infinity form. This is 1 to power infinity form. Okay, so in this form we will also take the logarithm. ठीक है, तो
let this is a is just equal to limit x tending to 0, and this is your tan of x divided by x whole power 1 upon x square. Okay, taking log on both sides. On both sides, तो जब log ले लेंगे तो you will have log a is just equal to limit x tending to 0. This will be 1 upon x square, and this will be log of tan x divided by x. Okay, so you can see, इसको थोड़ा सा और हम अच्छे से लिखना चाहेंगे ताकि आपको दिखने लगे क्लियरली. So this is your log of a just equal to limit x tending to 0. You can put in the numerator like this. This is tan x divided by x. This is one thing, and upon में x square. Now, when you are going to apply this x tending to 0, so this will be tending to 1. It means log 1 will be tending to 0, and denominator is also 0, so it will be 0 upon 0 form. ये हमारे पास 0.0 फॉर्म होगा. अब इसका हम डेरिवेटिव करते हैं. लेट अस डू द डेरिवेटिव बाय द डीएल हॉस्पिटल रूल. ओके, so this is log of a is just equal to, this is limit x tending to 0, और log tan x अपॉन x है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x. इट मीन्स x अपॉन tan x. पहली बात तो ये हो गई. ओके, एंड फर्दर हम लोग करेंगे x अपॉन tan x, एंड फर्दर हम करेंगे इसको थोड़ा सा एक काम और कर सकते हैं. तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं. दिस इज लॉग, कर लेते हैं. दिस इज लॉग tan x अपॉन x, तो दिस विल बी 1 अपॉन, रेसिप्रोकल हो जाता है, तो दिस विल बी 1x अपॉन x ऊपर हो जाएगा अपॉन tan x, और फिर फर्दर हमें डेरिवेटिव करना होगा किसका, tan x अपॉन x का, है ना, और डिवाइडेड बाई 2x, बिकॉज एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x. तो बाई डी एल हॉस्पिटल, ये सही. ठीक, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज this is log of a is just equal to, this is your limit x tending to 0. This is your, this x is cancel this one, so you will have take the derivative of this first. So here this will be have x derivative of tan is sec square of x, and minus this is tan x, and derivative of x is 1, so this will be tan x, and this is divided by x square. Okay, and this x is cancelled to this x, so you will have in denominator, this is a 2 tan of x, looks like. Okay, okay, so what you get from here, this is the log of a just equal to limit x tending to 0, and now it remains x sec square of x minus का tan x divided by, this is your 2x square into tan of x. This is remains. Okay, so again, if you apply the limit, you will get 0.0 form. 0.0 form, x sec square x minus tan x upon 2x square tan x. तो न्यूमरेटर में भी 0 है, डिनोमिनेटर में भी 0 है, तो यू कैन अगेन अप्लाई द डीएल हॉस्पिटल रूल, और एनीथिंग यू कैन सी दैट हेयर. यहाँ पर आप ये कर सकते हैं, इसमें x मल्टीप्लाई कर लीजिए और यहाँ पर x डिवाइड कर लीजिए, तो ये लिमिट आपकी 1 हो जाएगी, है ना. तो थोड़ा सा आपको
सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो दिस इज लॉग ए इज जस्ट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, और ये हो जाएगा एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस का टेन एक्स डिवाइडेड बाई दिस इज टू एक्स क्यूब। ओके, और इसकी लिमिट हमारे पास वन हो जाएगी, या यू कैन से दिस इज नथिंग, दिस इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एंड दिस इज टेन, न्यूमरेटर रहेगा भाई, तो थोड़ा सा इसको ऐसे लिखिए, वन अपॉन दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, दिस इज tan x अपॉन x। ओके, तो इसका लिमिट तो वन होता है, वी नो दैट, तो दिस बिकम्स वन। तो यहाँ पर अब इसमें हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, तो नॉट लिमिट लॉग ए, दिस इज लॉग ऑफ ए जस्ट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। अब इसको डेरिवेटिव करते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, दिस इज योर एक्स टू sec of x इंटू sec x इंटू टेन एक्स, ये हो गया डेरिवेटिव। और फिर हमारे पास हो जाएगा प्लस प्लस sec स्क्वायर एक्स, बिकॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा वन, और इसका भी हमारे पास sec स्क्वायर एक्स डेरिवेटिव होगा, डिवाइडेड बाई थ्री टू जस्ट सिक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। You can see this cancelled out. This is again 0 upon 0 form. So you can again take the derivative of this is equals to limit x tending to 0. This will become, this is 2 times x sec square of x into tan x. This is divided by 6x. ये by hospital rule, BL hospital rule. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वल टू लिमिट, दिस इज लॉग ऑफ ए जस्ट इक्वल टू दिस इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, एंड इसको फर्दर हम टेक द डेरिवेटिव, तो दिस विल बी व्हाट एक्स 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 का डेरिवेटिव वन, तो एक्स का ही डेरिवेटिव लिखिए, इट विल रिमेन सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स प्लस का सेक स्क्वायर का हो जाएगा, तो दिस इज एक्स टू सेक एक्स इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स ऑन टेन एक्स। ओके, एंड प्लस का दिस इज एक्स सेक स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू 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 योर सेक स्क्वायर, टेन का हो जाएगा सेक स्क्वायर, दिस इज व्हाट, दिस इज योर सेक स्क्वायर। ओके, and divided by 6 to the 12 of it. Okay, तो again let us simplify it first, तो ये हो जाएगा log of a just equal to limit x tending to 0, और this is 2 bracket में sec square of x into tan x is, that is okay, plus what is remaining here, this is 2x sec square of x into tan square of x, and plus this is your x into sec की power 4 of x, this will remain divided by 12 of x। 12x की जगह पर 2 से आप काट भी सकते हैं, तो यहाँ पर 6x बच जाएगा। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, this implies this is your log of a just equal to limit x tending to 0, and this is your sec square of x into tan x, that is your c, plus this is your you know that just 1 plus tan square x is just equal to sec square. So from here you can, in the tan square x, in the place of tan square x, you can use sec square x minus the 1.
So if you want, you can. So here this is 2x sec square x, and this uh, writing here this is sec square x minus the 1 and plus the x sec की power 4 and divided by this is 6. ओके, इससे फायदा क्या होगा, इससे थोड़ा सा हमारा रिड्यूस हो जाएंगी चीजें इन दिस टू फॉर्म. So this is what log of a is just equal to limit x tending to 0, और ये हमारे पास हो जाएगा this is what, this is sec square of x into tan of x. ओके, that is okay. यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दिस इज देखिए 2x सेक की पावर 4x, यहाँ पर x हो तो यहाँ पर हो जाएगा 3x सेक की पावर 4x, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट माइनस का 2x सेक स्क्वायर. ये इतना हमारे पास बचा, और इसको एक बार अभी और हमें डेरिवेटिव करना है. So you can see when you are applying this extending to 0, you will get again 0.0. तो फिर से आपको एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है और देखना है क्या है. तो दिस इज योर log ऑफ a जस्ट इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0. आइए जरा फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का रूल लगाएंगे. 2 ऑफ sec x इंटू sec x इंटू tan x, ये हो गया, और इंटू tan x, बिकॉज sec स्क्वायर का 2 sec x, फिर sec x का फर्दर sec x इंटू tan x मल्टीप्लाई था, फिर यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर ऑफ x इंटू tan का हो जाएगा sec स्क्वायर ऑफ x, प्लस here we are going to find derivative of this. So this is 3 times first function, मतलब sec की power 4 of x, and plus x, it means this will be 4 sec cube of x into sec x tan x. sec x का फर्दर करेंगे तो ये आ गया, एंड प्लस दिस इज नॉट प्लस, माइनस एक्चुअली. So it will be minus of 2 ब्रैकेट में sec square x and plus this is x into 2 sec x into sec x into tan. ये अपन जो है न्यूमरेटर का हो गया, और डिन्यूमरेटर में क्या बच जाएगा 6. ओके, तो आइए जरा देखते हैं कि क्या बच रहा है. अब हम डायरेक्टली लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं और वी विल गेट सम फाइनाइट पे. तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये टर्म तो 0 हो गया. डायरेक्ट करने सिंप्लीफाई करने की, क्योंकि हमें जो टर्म 0 हो जा रहा है उसको फिर सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है. यहाँ पर आपका 1 बच जाएगा, तो हेयर दिस 1 इज रिमेनिंग बिकॉज कॉस 0 की सेक 0 की वैल्यू 1 होती है. यहाँ पर सेक 0 की पावर 4, मतलब 1 की पावर 4, इट मीन्स 1 इज हियर, तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म तो यहाँ पर 0 हो जा रहा है, बट ये वाला टर्म के अंदर 1 बचेगा, तो इट विल बी 3 टाइम्स 1. ओके, और इसमें क्या बचेगा, अगर हम यहाँ पर, ये टर्म तो 0 हो गया, यहाँ पर तक 0 का वैल्यू 1, तो इट विल बी माइनस का 2 इज रिमेनिंग and divided by 6. So it means that this is 4 minus 2 divided by 6. It means this is 2 by 6. It means 1 by 3. तो यहाँ पर जो log आपका है, log a की जो वैल्यू आई है, that is equal to 1 by 3. This implies a is just equal to e to power 1 by 3. ओके, और ये तुम्हारे पास क्या था, हमें लिमिट कैलकुलेट करनी थी. दिस इज लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, दिस मीन्स दिस implies this is limit x tending to 0, और this is your tan of x divided by x is just equal to 1 by 3 x cube is just equal to e to power 1 by 2. This is your 12th नंबर प्रॉब्लम. यस, 12th का आंसर क्या है, e पावर 1 by 6. ओके, थोड़ा सा लेंथी था बट यू विल हैव टू डू, आपको करना होगा, और बस आपको पेशेंस बना के रखना, अपना प्रोसेस आपको ध्यान रखना. ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज योर लिमिट
x टेंडिंग टू इंफिनिटी और 1 प्लस ए अपॉन x की पावर. You can see this is because when x tending to 0 then a upon x will be tending to 0 और ये हमारा इंफिनिटी, तो दिस इज 1 टू पावर इंफिनिटी फॉर्म, है ना. तो इसमें भी हम log ही लेंगे. तो आई एम जस्ट टेकिंग let a is just equal to, this is your limit x tending to infinity and this is 1 plus a upon x to power x, taking log on both sides. taking log on both sides. तो जब log लेंगे तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, log a, it will be log a and that is equals to limit x tending to infinity और हमारे पास x बाहर आ जाएगा तो it will be x into log 1 plus a upon x. So here you can see this is nothing, this is infinity into 0 because log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है और x तो infinity टेंड ही कर रहा है तो दिस इज infinity into 0 फॉर्म. तो इसको हम थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे. दिस इज log a is just equal to, this is limit x tending to infinity और this is log of 1 plus a upon x and divided by 1 upon. तो यहाँ पर 1 upon है when x tending to 0 this will be tending to 0. तो infinity को हमने 0 भेज दिया और upon में 0 हो जाएगा. तो this is nothing, this is now 0 upon 0 upon, this is 0 upon 0 upon. तो हमारे पास क्या बचेगा, अब हम इसको अप्लाई कर सकते हैं डीएल हॉस्पिटल रूल. log a is just equal to, अच्छा डेरिवेटिव करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, log का तो हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस ए अपॉन एक्स और ए अपॉन एक्स 1 प्लस ए अपॉन एक्स का फर्दर होगा तो इट विल बी माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर एंड इसका क्या हो जाएगा, दिस विल बी 1 अपॉन माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. ओके, तो बाई डीएल हॉस्पिटल रूल, दिस इज बाई डीएल हॉस्पिटल रूल. ओके, तो यहाँ पर हम जब करेंगे तो यू विल गेट this is log of a is just equal to, this is limit x tending to infinity. थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, दिस विल बी ए अपॉन 1 प्लस ए अपॉन एक्स. सो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो व्हाट यू गेट फ्रॉम हियर, दिस विल बी 0 तो यू विल हैव गेट ओनली ए हियर, है ना. ए आपको बचेगा और दिस इंप्लाइज दिस ए इज जस्ट इक्वल टू ई टू पावर. ओके, सो दिस इंप्लाइज क्वेश्चन नंबर 14 13 था ना, तो इट इंप्लाइज limit of this function, limit when x tending to infinity of this is 1 plus a upon x is just equal, x is just equal to e to power a. This is it. Okay, so question number 13 का आंसर क्या है, e to power a. ओके, आइए 14 नंबर प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 14, this is limit x tending to infinity, this is log of x divided by x का होल पावर 1 by. ओके, तो यहाँ पर वी कैन सी कि अगर हम यहाँ पर x टेंडिंग टू इंफिनिटी करते हैं तो फ्रॉम हियर दिस इज log x अपॉन, ठीक है,
दिस विल बी इन्फिनिटी, मतलब ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी होता है, इसका जो वैल्यू होता है दैट इज टेंडिंग टू 1। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए सॉरी टेंडिंग टू 0, तो इट विल बी 0/0। अगर हम इसको अलग से लिमिट इसकी कैलकुलेट करें, थोड़ी देर के, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एंड दिस इज log x डिवाइडेड बाई x। तो दिस इज ऑब्वियस सी बात है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है। इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। इफ आई एम जस्ट टेकिंग द डेरिवेटिव एक्सटेंडिंग टू जीरो इन्फिनिटी, दिस इज 1/x/1, और इसमें जब लगाएंगे तो इट विल बिकम 0। तो इट मीन दिस लिमिट इनसाइड द ब्रैकेट इट टेंडिंग टू 0, एंड ऊपर भी हमारे पास 1/x है, तो इट विल बी टेंडिंग टू 0। तो दिस इज नथिंग, दिस इज 0 to power 0 फॉर्म, दिस इज 0 to power 0 फॉर्म। तो आपको लॉग लेना पड़ेगा। अगर वन वन फॉर इंफिनिटी, 0 to power 0, या फिर इंफिनिटी पावर 0, इस तरीके के जो फॉर्म्स हैं उनके लिए हमें लॉगरिथमिक लेना पड़ता है। तो जस्ट टेक द लॉग। तो सबसे पहले मान लेते हैं, लेट a जस्ट इक्वल टू, दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी log x divided by x into 1. So what? Taking log on both sides. On both sides. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज log of a is just equal to limit x tending to infinity. This will be 1/x into log x divided by this is x. Okay, so here you can say this denominator tending to infinity and numerator is also tending to infinity. इसको थोड़ा सा इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, और log को ऊपर लिख दीजिए, दिस इज log x अपॉन x, ओके, डिवाइडेड बाई दिस इज, ओके। तो टेकिंग द, दिस इज नथिंग, दिस इज इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म, ओके। तो हम इसको डायरेक्टली बाय द डेरिवेटिव कर सकते हैं, दिस अप्लाइंग द एल हॉस्पिटल रूल। दिस implies log of a is just equal to, okay, so this is limit x tending to infinity, log का होता है 1/x, तो इसका मतलब हो जाएगा दिस विल बी x अपॉन log of x, ये हो गया। फिर log x का फर्दर करेंगे, तो ये फर्स्ट फंक्शन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो दिस विल बी x इंटू 1/x माइनस x का डेरिवेटिव 1 एंड log x, और डिवाइडेड बाई जो भी x होगा उसका स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाई यहाँ पर x, जो नीचे वाला डिन्यूमरेटर वाला x है उसका वैल्यू 1 हो गया। वी हैव डन विद बाई डी हॉस्पिटल रूल। ओके, so this implies log of a just equal to, you can cancel it out, this is cancelled with this and this will cancel with this. What is remains here, this is limit x tending to infinity, and this is 1 minus log of x, 1 minus log of x divided by x log x. Okay, so it will be x log x. Again, this will be infinity upon infinity form. This will be infinity upon infinity form. You can see if you are just divided by, this implies this is log of a just equal to, this is limit x tending to infinity, जो divide कर देते हैं separately, so this is 1/x log of x minus log से log cancel, so this will be 1/x, okay।
So here you will get 0, this is 0 minus 0, you will get 0. तो ये जो लिमिट आई वो हमारे पास 0 आ गई. दिस इम्प्लाइज a is just equal to e to power 0, इट मीन 1. तो हमारे पास जो फंक्शन था, जो 15th नंबर, that is log. So this implies limit value of this limit, that is limit x tending to infinite log of x divided by x का whole power 1 by x is just equal to 1. So this is your answer. So question number 14 का जो आंसर है that is your 1. Okay. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, उसको करते हैं. एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड कर देंगे, क्योंकि वी हैव 25 प्रॉब्लम इन योर एक्सरसाइज. So this is 15th number. So after that we will remain 10 questions and I will solve them in a separate lecture. Okay. So question number 15. So this is limit x tending to pi by 2, and this is your sine of x to power 10 of x. So you know that when x tending to pi by 2, this sin x will be tending to 1 and tan x will be tending to infinity. So it is nothing, this is 1 to power infinity. 1 to power infinity फॉर्म. तो यहाँ पर भी आपको लॉग लेना पड़ेगा, लॉगरिथमिक लेके हम करते थे. We are just taking let a is just equal to this limit x tending to pi by 2, and this is your sine of x into tan of x. Okay. Taking log on both sides. Taking log on both sides, so this is log of a is just equal to log of a is just equal to this is what we will get. This is log of a is just equal to this is limit x tending to pi by 2, and this will be tan x, बाहर आ जाएगा, and this is log of sin. Okay, so now it becomes infinity into 0 form, because when sin x tending to 1, log x will be tending to log sin x will be tending to 0. So this is infinity into 0 form. तो इसको फर्दर आपको कन्वर्ट करना है. So this implies log of a just equal to, हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज योर लिमिट x टेंडिंग टू pi by 2, और ये tan है वो cot में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो दिस इज log sin of x डिवाइडेड बाई cot of x. ओके. अब ये हमारे पास जो अब हमने cot में बदला, तो दिस इज नाउ 0 और दिस इज 0, दिस इज ऑन 0.0. और बस सिंपली आप डी एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए. तो दिस इम्प्लाइज log of a just equal to this is your limit x tending to pi by 2, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन साइन ऑफ x, और साइन का होता है कॉस ऑफ x, डिवाइडेड बाई इसका हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर. ओके. तो फ्रॉम here you will get cos upon sine. It means you will get looks like this limit x tending to pi by 2. Okay. So this is cos upon sine, it means cot of x divided by minus का cos x square. You can see cot x, when x tending to pi by 2, cot x will be tending to 0.
and this will be tending to 1. So this will be equal to 0. So this implies log A is just equal to 0, and from that you will get A is equals to e to power 0 and that is equals to 1. तो इसका मतलब है जो 15th नंबर क्वेश्चन का आंसर है दैट इज योर 1. So this implies limit x tending to pi by 2 sine of x का power 10x is just equal to 1. Yeah. ओके, तो होप सो कि ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को. क्वेश्चन नंबर 15 we have completed. तो question number 16, 17 and words I will solve in the next lecture. So if you are not able to solve that problem, you can visit the next lecture too. Okay, so we will meet in the next lecture. Thank you so much for watching.